और आज भी वो फंक्शन स्कूल ऑफ लॉ पूरी शारदा यूनिवर्सिटी को बल्कि पूरे शहर को याद है कि जिस लेवल का फंक्शन आपके नेतृत्व वो किया गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आपने अपना समय शारदा विश्वविद्यालय को स्कूल ऑफ लॉ को दिया। और जैसा मैं बता भी रहा था, आनंद स्वरूप जी मेरे फादर हैं, उनकी वैल्यूज़, उनके सिस्टम, शारदा मेरी मदर का नाम है। उन्होंने जो वैल्यूज़ दी हैं बचपन से हमको, और हमारी पूरी कोशिश है कि शारदा विश्वविद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं एक बेहतर प्रोफेशनल बने, अच्छे प्रोफेशनल बने, देश और दुनिया में बेहतर काम करें और इस देश को जो गर्व, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं 2047 तक भारत राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है, वो तभी संभव है जब विश्वविद्यालय, वहाँ पढ़ने वाले छात्र हर रोज कुछ नया सोचें, कुछ नया करें और क्या आने वाले समय में क्या नया हो सकता है। उसी पे हमारा चिंतन मंथन इस यूनिवर्सिटी को दिशा दे रहे हैं मेरे बड़े ब्रदर श्री पी.के. गुप्ता। हर रोज हर पल उनकी यही सोच रहती है नेक्स्ट क्या, और चीज़ों को बेहतर कैसे करना है। प्रोफेसर खारा जिन्होंने काफ़ी कोशिश की विश्वविद्यालय को नई ऊंचाई पर पहुँचाने की। और सर बताना चाहता हूँ कि A+ NAC का ये रेटेड यूनिवर्सिटी है और NRFS की 86 रैंक है और स्कूल ऑफ लॉ से 2012 में शायद शुरू किया था। और अब बहुत सारे बच्चे मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि सर मैं वहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया हूँ, सर मैं वहाँ ADJ बन गया हूँ। तो लगता है कि चलो कोई शारदा विश्वविद्यालय का एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन है क्लास के लिए कि जो बच्चे जुडिशरी में पहुँच गए। और बहुत सारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लोअर कोर्ट्स में प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और अब जहाँ देश में पूरी दुनिया की इंडस्ट्री यहाँ लगाने के लिए आतुर है कि भाई भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है। और तो ऐसे में जितने भी फॉरेन कंपनीज आ रही हैं तो उनको भी देखने के लिए एक अच्छी लॉ फर्म जितनी भी हैं उन सबको भी एक अच्छे एडवोकेट्स की ज़रूरत है। तो उस पर भी शारदा विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ लॉ बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। और एक जो नई सीरीज शुरू की है कि मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से आज ये पहली सीरीज शुरू हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर आपका व्याख्यान है और ये सीरीज चलती रहेगी। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज इस सीरीज आपके माध्यम से शुरू हो रही है, आप और भी अपने कोलीग्स, जजेस और जो आपके परम मित्र हैं उनको शारदा से जोड़ें, जिससे शारदा और बेहतर कर सके और शारदा स्कूल ऑफ लॉ नई ऊंचाई पर पहुँच सके। और ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इनको भी मैं चाहता हूँ कि समय समय पर आपके दिशा निर्देश इनको मिलते रहें कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे इंटर्न इनको कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो और जो आपके अच्छे कोलीग्स हैं उनके पास ये बच्चे बेहतर ट्रेन हो सके और बेहतर कॉपरेशन कर सके। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विश्वविद्यालय में आने का, स्कूल ऑफ लॉ में बहुत अवसर पर माय लॉर्डशिप बिंदल साहब के यहाँ आना मेरे लिए एक बहुत गर्व का एहसास करा रहा है। आप सबके लिए मिलते इतनी महान विभूति हमारे आई है, ये दूसरा ओकेजन है और इनकी सादगी और इनकी जो ख्याति है पूरे देश में है, क्योंकि ये पंजाब हाई कोर्ट से फिर यूपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। तो बिंदल साहब मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। भाई शरदा साहब ने बहुत सारी बातें कर दी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस सभागार में जितने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग महज वकील नहीं हैं, आप इस देश के सबसे बड़े प्रहरी रक्षक हैं। क्योंकि किसी भी देश की जो फ्रीडम है
वो लॉयर ही कहलाते हैं। आपका जो कंट्रीब्यूशन है, मैं 47 से पहले की या 1940s की बात करूँ तो देश को आज़ाद कराने में वकीलों का सबसे बड़ा योगदान है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू, और आज भी इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पावरफुल मिनिस्टर भी कहीं ना कहीं वकालत से संबंध रखते हैं। दूसरी चीज, ये सबसे लुक्रेटिव प्रोफेशन है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। देश के बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा इंजीनियर, बड़े से बड़ा IT प्रोफेशनल एक टाइम के बाद रिटायर हो जाता है, वकील कभी रिटायर नहीं होते। मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब राम जन्मभूमि का जब केस चल रहा था, जस्टिस वेणुगोपाल सीनियर एडवोकेट हैं, बेचारे बिना चप्पल के आते थे वो, और घंटों आर्गूमेंट करते थे 80 साल की उम्र में। तो वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जितने आप पुराने कोर्ट चलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मेहनत और आपकी ख्याति बढ़ती जाएगी। और आज का टॉपिक भी यही है कि हिंदुस्तान को अगर यदि 47 में अगर डेवलप नेशन बनना है तो जुडिशियल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स की बहुत आवश्यकता है। और आज भी हमारे देश में ये जो सामंतवादी व्यवस्था है कि मैं राजपूत हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं अफसर हूँ, एक सरफेसी की जो है एक कल्चर अभी भी चला रहा है अंग्रेजों के ज़माने से। जो कोई भी पावर में आता है वो नीचे वाले को दबाने की कोशिश करता है या उसको एहसास कराता है कि यू आर नोबडी। इट इज़ द जुडिशियल सिस्टम बेसिकली गिव्स देयर फंडामेंटल राइट्स कि आप क्या बिलोंग करते हैं, आपके अधिकार क्या हैं। और आज थिंक जो सीरीज जो हो रही है उसी बात पे हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर इंसान, हर देश के इंसान को क्या पावर दी हुई है और कैसे अपनी पावर को यूज। You see, coming to any institution, educational institution is a learning process for us. Otherwise, we just go to the court, hear cases and decide. Some subject is there, naturally we need to study something different. And that's a learning process. And I think in the profession you are going to enter, if your students are there, it's a lifelong process. It's not going to end after you take your degree from it. That's a base only. That gives you an eligibility only, basically, that you can practice law. That's all. You will have more challenges after you enter the profession, or maybe service also. Some people the students after passing out will go in service also maybe. But one fact is there. I will start with that. Be serious in your studies if you are in college. Otherwise, you see, teachers know everything, wherever the teachers are. As they have called me, they also teach me also something, so they have called me also. They continue calling you, wherever you go. So be serious, otherwise, this student had not studied in the law school somewhere, so call him, teach him. So this all continues. Moot court has been inaugurated. This is, I think, one of the main factor in any law college. You have, in fact, technically, if you call me, we call that, it's a real life. Real life experience is a little different if you go to the court. But still, the ambience of the court we have just inaugurated, I think maybe better than many courts we have in different courts. Maybe some of the courtrooms even in Supreme Court also are not that good. Because some extensions were there, so naturally some small spaces were also made the court. And the high courts also, all high courts may not have that big courtrooms also. So that gives you a feeling, basically, that you are, yes, you are in court, distance from the dais to the place where the students will argue. That gives you a confidence, basically. It's only to make you open up that yes, you can with confidence argue, you can answer the questions you can answer only if you are ready with the brief. So that gives you confidence. Now coming to this subject, what I was seeing, just see the motto of the university. What I was reading was, in 2 words, they say beyond boundaries. That's the motto. So that means beyond out of box thinking you need. So that's the idea, you be innovative. No innovation, you are seeing the technology part, IT part. So daily new innovations are coming. It's only, that's the idea of the university, to build you, to give you that kind of education so that you can do. Because now the position is going on a beaten track, you don't get anything unless you have some new idea.
That's why the startups and all that, they say you have new ideas, bring something new. So then you take the lead. So this is the motto of the university. Now a lot has been said about Mr. Anand Shok Gupta ji, in whose name we have just inaugurated the moot court and this lecture series. Lecture series is meant only to give a reminder to all of us that what this great man had done, what was his vision. Now I was reading a Chinese, small few lines the Chinese poet said. I just read, I think this fits in for Mr. Anand Shok Gupta. If you are thinking for a few months, grow fruit and trees, fruit and vegetables. If you are thinking of few years, grow trees. If you are concerned about future generations, educate your children. So this was the vision that he started. He had the vision to open some educational institution or motivated his family members, his children to do all this because he was thinking about the future generations. And this is what is being done. And at present about 20,000 students studying here and lakhs have already passed out. So that shows what kind of in that also a lot of guidelines were laid down, but the court left it for the parliament to frame the law. But parliament as such till today has not framed any law thereafter. But there are 3 states who have framed the law. UP, Madhya Pradesh and Haryana. The law is that if somebody destroys the property, you can recover the damages from it. Though may not be in much cases they have recovered, but still the law is there now. So this is, you see, initially, as Swaran Singh committee said, we should enforce them, make it penal. That was not made directly, but these laws were framed, some of the laws I have discussed with you, I have referred to. So those were framed making it penal also. If you damage the property, then you are liable to damages, prosecution, everything is there. Now clause J, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavors and achievements. So here we read is nation first approach. Not that individually I should do something. What is good for the nation? I had gone in a program for a tax conference was there. So normally what is said in taxes we pay to buy civilization. This is the opening line in any tax article you will read. I just said them one thing. I said taxes we pay to make our country strong. You see, now we are saying one person in the world, normally sometimes we say big daddy also, how he is manipulating everything in the world. Dictating everything, I will give you arms, you give me minerals, you give me this. Blackmailing basically everything. Only because it's said to be a rich country. So there are a lot of debts in that country also. So this is how, if we are rich, we could face this war also because we could afford it. We could face the pandemic also because we have the resources. So this is what happens. So now you see, in this also excellence part, we have one judgment because we have the national awards, different, to promote people to do more, or whosoever is doing in any area something good. But some people are there who will challenge all this also. Somebody challenged why these awards are being given. So that was upheld by the Supreme Court in '96 because this is to promote it. There is one judgment also of the Supreme Court, M. Nagaraj, Article 16(4) was under challenge and all that amendment. So there also the Supreme Court said one few lines. I'll just read that. This has been one of the most memorable the dean of this law school. We had a very important milestone achieved, and that is to have a brand new moot court hall with us. And I'm really thankful to our management, our chancellor, our co-chancellor sir, that they have accepted our need and they have given all the resources that are required to have a state-of-the-art moot court hall. Thank you, sir, very much. I also thank Honorable Mr. Justice Rajesh Bindal sir for giving us this valuable time and also enlightening us about a very important aspect of fundamental duties. Because as our rights are fundamental, rightly said by Lordship, our duties are also fundamental, and that has to be respected and that has to be followed.